Okay, so once again, very good afternoon to all of you. Today we are going to discuss our remaining questions of 9M 6.4. Okay, so let us discuss those questions. So first let me import these questions 8, 9, 10, 11, right? Let me import question number 8. Now, if you observe this question, they are asking you in the given figure PQ is parallel RS, these two vertical lines are parallel. Angle AEF is 95 degree, okay? Angle AEF is 95 degree. Next, angle BHS is 110 degree. So let me write these angles first in the figure so that you can get more clear idea. Angle AEF is 95 degree. Angle BHS is 110 degree. Angle ABC is X. ABC. This angle is X. Okay, find the value of X. Who will tell me how we can find this? Just raise your hand. Okay, easy question, isn't it? Yes, Mansa, tell me. Sir, am I audible? Sir, in this it is given that PQ is parallel to RS. Yes, PQ is parallel to RS, then? And we'll consider AB as a transversal. Okay, ABS transversal. Then angle EGH is equals to angle AEF because corresponding angle. Very good. So if this is 95, this angle is 95. Right, let me write this simultaneously. So here angle EGH is equal to angle AEF because corresponding angles. Okay, so if these are corresponding angles, then angle EGH is equal to 95 degree. Next. Sir, if RS is a straight line. RS, okay, yes, then? Sir, then angle BHS plus angle BHR equals to 180 degree linear pair. Angle, which two angles? Angle EGH and BGH. Sir, angle BHS. BHS, okay, BHS and BHG. Okay. BHR. Okay, both are same. So here angle BHS plus angle BHG is equal to 180 or BHR, whatever you can say, because linear pair. Okay, next. So we'll get angle BHR as 70. Okay, so if okay, so let us follow your notation only. 110 plus angle BHR is equal to 180. So angle BHR is equal to 180 minus 110, that is 70. Okay, next. Sir, if we consider triangle GBH. GBH, yes. Sir, angle BHG plus angle GBH. Okay. So in triangle BGH, yes. Which two angles? Angle GHB. G. Okay. Plus GBH. Yes, sir. Angle GHB plus angle BGH. Right? GHB and GBH, sorry, my mistake. GBH. Okay, tell me. Then next, what is sum of these two angles? Is equals to EGH.
EGH. Very good. Because exterior angle theorem is equal to angle EGH. Because exterior angle theorem. So if I put all these values now, so therefore angle GHB, right? What is the value of angle GHB? GHB and BH are both are your same angles, 70 degree, plus angle GBH is X. GBH is X is equal to angle EGH. Right, angle EGH is 95. Yes, definitely. We can do this with angle sum property as well, Chandan. So X is equal to 95 minus 70 implies X is equal to 15. Okay. No, sorry, my mistake, 25. X is equal to 25. Okay. Okay, thank you, Mansa. Everyone got this? I think Ahad is having some doubt. Yes, Ahad, you can unmute yourself and ask me. We can take imaginary angles. So here, where do you want to take imaginary angles? Yes, we can take, but those angles should be proper. Okay. So can you ask me here where you are thinking of taking imaginary angles? Can I know that? Sir, near corresponding and vertically opposite angles. Near corresponding and vertically opposite angles. Wait, just a minute. Can you tell me name of that angle or how we can do this? Corresponding, see, these are corresponding angles. This is vertical opposite angle. So how you want to take imaginary angle? You want to connect? Sir, can I annotate? Yes, wait, give me, let me give you permission. Yes, you can annotate now. Ahad, are you annotating? Sir, the option is not visible. Option is not visible. Why? I have given you. Okay, wait. Yes, now you can annotate. Okay, I have given you permission now. Yes. Can you see option? Okay. Yashash, please. Okay, these two angles. Yes. Then. Okay, this. So where is your imaginary angle? It is better if you speak. Wait, with annotation, if you speak, then we can understand that. Sir, near angle F and Okay. Near angle F. Okay. Then. vertical opposite angle of angle F. Okay. Okay. Vertical opposite angles. Next. Vertically opposite angle of angle E. Okay. Next. Vertical opposite angle of angle H. Okay. And vertical opposite angle of angle R. हाँ, so उसमें एग्जैक्टली आपने क्या इमेजिनरी एंगल लिया? इतना ही ना बस? Yes, sir. हाँ, that's it, इनफ. ओके, क्योंकि वो तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, नो इश्यू. ओके. Okay. So now let us move towards next question. Okay, so this was your all about question number 8. Now let me start question number 9. Okay, yes, Chandan, you can ignore that. Exactly, बस वो हमें देखना था कि वो मेथड से हो रहा है या नहीं. That's it. Okay. So in the given figure,
TQ and TR are the bisectors of angle Q and R respectively. If angle QPR is equal to 80 degree and angle PRT equal to 30 degree, which is already mentioned there. So determine angle TQR. Who will tell me? Raise your hand. Yes, Navya? Yes, Navya, yes. You have raised your hand. Tell me. Sir, are you asking me the answer of this question? Yes. You have raised your hand for that only or for any other purpose? No, sir. Previous I had raised the hand. Okay. So do you want to answer this question or shall I? Yes, sir. Okay, yes. Tell me. Sir, angle PRT is equal to angle TRQ because TR is the bisector of angle PRQ. Just a minute. So here given that TQ and TR are bisector of Q and R, so since TR is bisector of angle R, angle TRP equal to angle TRQ. Agree? Next. So angle TRP equal to angle TRQ, which is equal to 30 degree. So this angle is also 30 degree. Next. Sir, so angle PRQ will be 60 degree. Angle PRQ. Yes. This whole angle is 60 degree. Okay. So therefore angle PRQ, you can directly write 2 times angle TRQ, which is equal to 2 times 30 degree. That is nothing but 60 degree. Next. Sir, in triangle PQR, angle PQR plus angle PRQ plus angle QPR is equal to 180 degree angle sum property. In triangle PQR, if I write in short form, angle P plus angle Q plus angle R is equal to 180, but better you write long form only. So 80 plus angle Q, that is whole angle your PQR plus angle R is 60 degrees equal to 180. 80 plus 60 is 140. So 180 minus 140, angle PQR will give you 40 degree only. Okay, next. So what they are asking us, angle TQR. Sir, So if this whole angle is 40 degree, then how I can find angle TQR, Navya? sir, TQR will be half of angle PQR. Very good. So angle TQR will be 20 degree. Yes, half of angle PQR. So it is equal to half of 40 degree, which is equal to 20 degree. So therefore angle TQR is 20 degree. Everyone got this? Okay, because this is your like this. No, you cannot assume any triangle to be isosceles triangle and you can proceed. No. Right. This is, see, check. PQR is your isosceles triangle? No. Because here this angle is 60 and this angle is 40. So you cannot assume any triangle to be isosceles triangle directly. Is it clear, Ahad? Yes, sir. Okay. Okay, next. So this was all about your question number 9. Now you are having doubt in 10 and 11. First 2 steps, right? Akshata. So Akshata, यहाँ पे ये बोला गया है TQ is your हाँ, तो वो नव्या मैं आपका क्लास के बाद देख लूंगा. वेट, अभी पहले ये देख लेते हैं. सो ये सी अक्षता, क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि जो आपका टी आर है वो एंगल पी आर क्यू का एंगल बाइसेक्टर है. सो टी आर इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी आर क्यू. सो सिंस टी आर इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी आर क्यू, दिस टू बोथ एंगल्स आर सेम, राइट. अगर ये एंगल 30 है तो दूसरा भी 30 हो जाएगा. और दिस होल एंगल, कैन आई से दिस होल एंगल विल बी डबल ऑफ दिस एंगल. सो फर्स्ट 2 स्टेप्स में बस वही किया है. वन एंगल इज 30, देन अदर एंगल इज आल्सो 30 एंड होल एंगल इज 60 डिग्री. Is it clear now? Miss Akshata? Okay.
Now let us see next question. Right, let me import that question here. Question 8, Navya, right? Okay, so ये नव्या ने ट्राई किया है क्वेश्चन नंबर Yes, 8 sir. by this method. Okay, let us check. So can you explain आपने क्या क्या किया है quickly? Okay, wait, let me zoom to your screen. Okay, so given PQ is parallel RS, angle AEF equal to 95, 11, 10 to find X. Okay, so first what you have done, let me take a red marker, it will be best. Okay, so PQ is parallel RS, so corresponding angles, angle NGE equal to 95. NGE is 95, yes, this step is completely right. Next, AB is line, so you got BGH as 85. Where is BGH? BGH, okay, because 90 plus 90 is 180. Yes, this is also fine. 85 is also correct. Next, you got BHQ as 70. 180 minus 110. So this is given as 110. So you got BHQ. BHQ as 70. Yes, that is also right. So now you have used angle sum property. So 70 plus 85 plus x, right? So 85 plus 70. ये wrong हो गया ना? Right? 85 plus 70. Just ये sum में problem हो गई. 70 plus 70 is 140. 140 plus 15, 155. 180 minus 155. So you will get your answer as 25. You got it? Yes, sir. Thank you, sir. Yes. Okay. Next. Okay, now let me import question number 10. आई थिंक प्रॉब्लम शायद विवी नगर में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. विवी नगर में 2-3 पेरेंट्स को आना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है. बाकी तो बाकी सब जगह एक एक पेरेंट्स से हो जाएगा. तो विवी नगर में देखते हैं 8, 9, 10 के 2 ग्रुप बनाने पड़ेंगे मोस्ट प्रोबेबली. चलो लेट अस सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. In triangle ABC, angle B equal to 45, angle C equal to 55, and bisector of angle A meet BC at point D. Find angle ADB and angle ADC. Okay. How can I find this? Anyone? Raise your hand. ये आपका एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल आपके सेम हो जाएंगे. Now you need to find angle ADB and ADC. Right. Okay. Yes, Prahlad, tell me. Sir, हाँ. so we should draw a line XY through point A. Draw line XY through point A means you want to draw this line XY, which is parallel Yes, to sir. BC. Okay. Yes, sir. Okay. Next. Sir, angle B will be equal to XAB. Okay. So alternate interior angle. This is 45. This is 55. Right. Next. Sir, by linear pair, sir, we will get angle A, sir. Okay. So you can get angle A by angle sum property as well. Angle A plus B plus C. Right. Isn't it? Both methods are right? Angle A plus angle B plus angle C is 180
Because angle sum property, right? What you have written is nothing but your proof of angle sum property, isn't it? So Yes, here angle B is 45, so therefore angle A plus 45 plus 55 is equal to 180. So therefore angle A, 45 plus 55, that is 50 plus 50, 100 is equal to 180. So therefore angle A is 180 minus 100, that is 80. Angle A is equal to 80. Okay. So, okay, tell me Prahlad, what should be next step? So we should consider triangle ABD. Okay, okay. Or can I say first what will be your angle of BAD, value of BAD and CAD? So 40, sir, because 40. AD is AD is of angle A. angle bisector, right? AD is angle bisector of angle A. Right. So since AD is angle bisector of angle A, since AD is angle bisector of angle A, I can say that angle BAD equal to angle CAD is equal to half of angle A. Therefore, angle BAD is equal to angle CAD is equal to half of 80. So half of 80 is nothing but 40. So angle BAD is equal to angle CAD is equal to 40. Okay, next Prahlad. So now by considering the triangle ABD, sir, we Yes. can apply angle sum property. Yes. Now let us apply same angle sum property in triangle ABD. Now in triangle ABD, so angle ABD plus angle BDA plus angle DAB is equal to 180. So angle ABD is 45. Angle BDA I have to find. And angle DAB. What is the value of angle DAB? 40 degree. So therefore angle BDA is equal to, now 40 plus 95. 40, 85, yes. 180 minus 85, which is equal to 95. So if angle BDA equal to 95, how can you find angle CDA? So similarly, we can apply. So similarly, we can apply angle sum property in another triangle. Yes. But can I apply linear pair concept here? Tell me, will it be easier or not? Yes, Linear sir. pair, right? Yes. So what way I was talking about? So angle CDA, angle BDA plus angle CDA equal to 180. What is the reason? Because linear pair. So therefore 95 plus angle CDA equal to 180. Therefore angle CDA equal to 85. Sir, Yes. Yes, Srushti SR, tell me. Yes, Srushti SR, will you speak something? कि गलती से वो सर बोल के खत्म कर दिया. ठीक है, everyone got this? Please give me some response. Okay, है आसान. जस्ट आपको एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करना है. ओके, 2 times, that's it. और एंगल बाइसेक्टर कंसेप्ट. तो इस तरीके से चलेगा ना, राइट? जस्ट व्हेन आई विल एक्सप्लेन यू विद फिगर, वो टाइम पे मैं ब्लू मार्कर से लिखूंगा and then after I can convert this into white one. Okay, will it be fine, students? Okay. Black पे blue readable है ना? Right, you can read.
Blue? Okay. Great. So this is about your question number 10. Next. इसके बाद आपको डाउट है क्वेश्चन नंबर 11 and then we can go to advanced question. Okay. एग्जैक्टली वो लिखूंगा तो व्हाइट से ही, राइट, बट आपके फिगर का बैकग्राउंड व्हाइट है. ओके, फिगर का बैकग्राउंड व्हाइट है तो उसमें मुझे डार्क कलर से लिखना होता है, तो इसलिए उसके लिए ब्लू कलर पसंद किया है. एंड आपका ये बैकग्राउंड ब्लैक है, तो उन दोनों में ऐसा कोई कॉमन कलर नहीं है जो यहाँ पे अच्छा है उधर बुरा है. दिस इज द थिंग. ओके, क्या किसी ने ये नोट्स ओपन करके देखे जो मैं लिख रहा हूँ? ये नोट्स ओपन करके देखे एनीवन? नहीं, ग्रीन व्हाइट पे बहुत वही, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि आपने नोट्स ओपन करके देखे. इट हैव यू ओपन दिस नोट्स एनीवन? यस. जयती, कैसे दिख रहे थे नोट्स? यस. दर्शन, कैसे दिख रहे थे? टेल मी. बैकग्राउंड व्हाइट पे थे? Sir, the background was white, sir. हाँ, बैकग्राउंड व्हाइट था, राइट, बट उस पे जो मैंने Sir, ये the text color was black. यस, टेक्स्ट कलर वाज ब्लैक. जो यहाँ पे मैं व्हाइट लिख रहा हूँ वो आपका ब्लैक हो जाएगा, राइट, बिकॉज ऑफ थिन. बट व्हाट आई वांटेड टू आस्क इज, जब व्हाइट बैकग्राउंड में ये कलर आप देख रहे हो, लाइट ग्रीन कलर, वो इट वाज नॉट गुड, राइट? टेल मी. ये राइट, ये पढ़ नहीं पा रहे होगे आप, जिन्होंने भी ओपन करके देखा होगा, राइट? दर्शन, समर्थ. ओके, यस, इजंट इट? जयती. सो यस, तो जो चीज वही जो ब्लैक पे अच्छा है वो व्हाइट पे अच्छा नहीं है. दिस इज द थिंग. तो वो है. हाँ, मोबाइल में ओपन नहीं होगा, मोबाइल में ओपन नहीं होगा, इसलिए बेटर कि मोबाइल में ओपन ना ही करो. ओके. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11. The side BC of triangle ABC is produced such that D is on ray BC. आपका D BC पे है. ओके, यस प्रज्वल, राइट. वो आप देख ही नहीं पाओगे, बहुत लाइट कलर है, इसलिए नोट्स यहीं से आप देख लो अच्छे से जब मैं पढ़ा रहा हूँ. अभी से स्क्रीनशॉट ले लो अगर बेटर वो है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो. ओके. द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A meets BC at L as shown in figure. हाँ, yes Chandan, in tab it can open. It depends on your RAM of tab. Okay. So जानवी P tab में ही ओपन कर दिए most probably. और बेटर आप ये कर सकते हो स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास सिर्फ मोबाइल है एंड यू वांट नोट्स, तो जिनके घर में लैपटॉप या पीसी है, राइट, उनको जस्ट बोल दो वो ओपन करके वहां से आपको पीडीएफ में प्रिंट करके भेज सकते हैं, राइट. दे कैन सेंड यू, राइट. हाँ, नहीं, टैब में भी हैंग होता है चंदन, वेट, जानवी ने बताया टैब में भी हैंग होता है. सो इसके लिए पीसी या लैपटॉप ही चाहिए, तो बेटर वही होगा कि वो लोग पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको भेज देंगे, वो आप मोबाइल में ओपन कर सकते हो. नहीं, इनिशियली मैं ही आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेज रहा था, बट इतना टाइम नहीं रहता है. ओके, इट रिक्वायर्स सो मच टाइम. सो मतलब हर एक क्लास का पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजने के लिए, बाकी आपके फ्रेंड्स आपको तुरंत करके भेज देंगे. ओके. So the side BC of triangle ABC is produced such that D is on ray BC. Okay. Yes, Prahlad. The bisector of angle A meets BC at L as shown in figure. Prove that angle ABC plus angle ACD equal to 2 times angle ALC. See, this is very, very important question. Okay. और लास्ट वीक जो कतर वाले हमारे बैच हैं, कतर वाले बैच में जो एग्जाम हुई थी, कतर वाली बैच के एग्जाम में ये क्वेश्चन मैंने पूछा था. ओके. सो मोरल ऑफ द स्टोरी, ये चैप्टर से अगर कोई मुझे पूछे कि सर आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है, तो आप मैं कौन सा पूछूंगा? आई विल आस्क दिस क्वेश्चन. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, तो इसको समझो. सो द साइड BC of triangle ABC is produced. D is any point on its ray BC. The bisector of angle A meets BC at L as shown in the figure. Prove that angle ABC plus angle ACD is equal to 2 times angle ALC. Now, how can we prove this? Tell me.
एंगल ABC प्लस एंगल ACD इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ALC. एनीवन? कुछ दिख रहा है आपको एक्सटीरियर एंगल जैसा? यस, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, राइट, और एक्सटीरियर एंगल थ्योरम. बट वो हम कौन कौन से ट्रायंगल में अप्लाई कर सकते हैं? दो ट्रायंगल आपको पसंद करने पड़ेंगे. सी, if you consider triangle ABC, so what is exterior angle of triangle ABC? Angle ACD or not? Right. So angle ACD equal to angle ABC plus angle BAC. And since AL is angle bisector, right? The bisector of A meets BC at L. So AL is angle bisector of A. So angle BAL equal to angle LAC and angle BAC equal to 2 times angle BAL. And here you can write angle ALC is your exterior angle of triangle ABL. Right. After that you can compare and find your answer. So see here. So here in triangle ABC, angle ACD is exterior angle. So angle ACD is equal to angle ACD is equal to angle ABC plus angle BAC. This is the result number 1 because exterior angle theorem or exterior angle property. Next. Now similarly in triangle ABL, angle ALC is exterior angle. So therefore angle ABL plus angle BAL is equal to angle ALC. Again because exterior angle theorem. And finally, since AL is angle bisector of angle BAC, so therefore angle BAC is equal to 2 times angle BAL or not. This is result number 3. Angle BAC equal to 2 times angle BL. Our aim is to prove ABC plus ACD equal to 2 times ALC. आपका ALC 2 times आना चाहिए. Right. अभी हमारे पास 3 रिजल्ट्स हैं. 3 रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करो. Right. और सोचो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं. Just observe these 3 results. And what we have to prove. We are having these 3 results and we need to prove that angle ABC plus ACD equal to 2 times ALC. बहुत सारे तरीके से आप इसे प्रूव कर सकते हैं. You can prove this by so many ways. Tell me students, please give me some response. How you can prove this? Okay. See, सिंपल है. पहला एंगल BAC की जगह मैं 2 टाइम्स एंगल ALC रख सकता हूँ और BAL. Right. Instead of angle BAC, can I write 2 times angle BAL in equation 1? Okay. So in equation 1, yes. So in equation 1, substituting
equation 3 in equation 1. Equation 3 आपका angle BAC equal to 2 times angle BAL. So BAC, so angle ACD equal to ABC. Angle ACD equal to angle ABC plus BAC, it is equal to 2 times angle BAL. 2 times angle BAL. Right, now what can I write as angle BAL? Right, आपको जो प्रूव करना है उसमें क्या चाहिए आपको, राइट? जो प्रूव करना है उसके ऊपर नजर रखो. You want angle ABC plus angle ACD equal to 2 times angle ALC. This you have to prove. So you want ABC and ACD. You are already having ACD and ABC. You want ALC. You don't want BAL. You want ALC. Can you convert BAL into ALC? See? Can you convert BAL into ALC from here? Tell me. So your BAL is equal to ALC minus ABL. Right, but again फिर वहाँ पे आपका ABL आ जाएगा. Right, and you don't want ABL as well, but ABL and ABC both are same or not? Right, just उसमें L को आपने extend करके C बनाया है. Are you getting my point, students? Okay, कैसे करना है वो पता चलना चाहिए. So therefore angle ACD equal to angle ABC plus 2 times. Now angle BAL. So angle BAL आपका क्या हो जाएगा? Angle ALC minus angle ABL. Your BAL will be ALC minus ABL because from result number 2. Hi Anna. Right, from result number 2, BAL equal to ALC minus ABL or not? Okay, students, please give me some response in chat box. Okay, so therefore angle ACD is equal to angle ABC plus 2 times angle ALC minus 2 times angle ABL. Now ABL and ABC both are same angles. Okay, now in next step I'll write angle ABL and angle ABC both are same. Why same? See, just L or C आपके points अलग हैं. This is your angle ABL and this is your angle ABC. If you extend this L to C, right? This is the thing. Are you getting? ABL and ABC. So ABL, L आपका यहाँ तक है और C यहाँ तक है. That's it. So एक ही एंगल के अलग अलग नाम है. Okay, different names of single angle. So angle A, let us write angle ABL as angle ABC. So angle ACD is equal to angle ABC plus 2 times angle ALC minus 2 times angle ABC. Now 1 ABC minus 2 times ABC. So therefore angle ACD is equal to 2 times angle ALC minus angle ABC. Right, 1 minus 2 is minus 1. So therefore minus angle ABC, if this will come to this side, this will become plus angle ACD plus angle ABC is equal to 2 times angle ALC. Hence proved. Okay, everyone got this? Okay, let me repeat this once again. See, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, समझो पूरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ. Okay, I'm repeating this whole question again. See here. Now, in the question, they are asking that the side BC of triangle ABC is produced to D. Side BC of triangle ABC is produced to D.
such that the bisector of angle A meets BC at L. Bisector of angle A meets BC at L. Right? A का bisector आपके BC को L पे मिल जाए. Then prove that angle ABC plus ACD, angle ABC plus angle ACD is equal to 2 times angle ALC. So angle ABC plus angle ACD is equal to 2 times angle ALC. So here if you can observe, so angle ACD is exterior angle of triangle ABC. Right? So from that you can write in triangle ABC, since angle ACD is exterior angle, so I can write angle ACD equal to angle ABC plus BAC. Right? Angle ACD is equal to angle ABC plus BAC. Right? Angle ACD equal to ABC plus BAC. Next, similarly, in triangle ABL, angle ALC is your exterior angle. So angle ALC equal to ABL plus BAL, ABL plus BAL. And finally, they have given that AL is angle bisector of BAC. So angle BAC is equal to 2 times angle BAL. BAC equal to 2 times angle BAL. Is this clear, everyone? Okay. अब आपके पास ये 3 इक्वेशंस हैं. You are having these 3 equations, equation 1, 2 and 3, and you need to prove this angle ABC plus ACD equal to 2 times ALC. Okay, तो पहले आप सबसे शॉर्टर इक्वेशन एंगल BAC equal to 2 times BL, इक्वेशन 3 को आप इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. Can you write this angle BAC as 2 times angle BL? Right. So in equation 1, angle ACD equal to ABC plus BAC, and you can write BAC as 2 times BL. So your first step clear हुआ first? Tell me. Right. Angle ACD equal to ABC plus 2 times BL. तो मैंने इक्वेशन 3 का यूज कर लिया इक्वेशन 1 में. 3 और 1 का यूज हो गया है. Now अब एक ही इक्वेशन का यूज करना बाकी है, that is equation number 2. Now how you can utilize equation number 2? So here you are having angle BAL. Right. So angle BAL can be written as ALC minus ABL from equation 2. ALC minus ABL. Can I write BAL as ALC minus ABL from equation 2? Tell me. Please give me some response, right? Can I write BAL as ALC minus ABL or not? Right. So BAL is ALC minus ABL. So after simplification, ACD equal to ABC plus 2 times ALC minus 2 times ABL. And ABL and ABC both are same angles. Okay. ABL and ABC both are same angles. Just आप L को extend कर रहे हो तो you are getting C. Okay. After extending this L, you are getting C. So ABL and ABC both are same angles. So after simplification, 1 ABC minus 2 ABC, you got minus angle ABC. If you transform minus angle ABC to left hand side, it is plus. So angle ABC plus angle ACD equal to 2 times angle ALC. Angle ABC plus angle ACD equal to 2 times angle ALC, hence proved. So everyone got this? Give me some response, right? I'm launching one another poll, that is solution clear? Right. You can give answer of this poll. Right. Is solution of this question clear? This is important question. Question number 11. Everyone please type in chat box. तो यहाँ आपका पूरा होमवर्क एक्सरसाइज खत्म होता है. अब एडवांस क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है, राइट? तो मैं फटाफट फिनिश करूंगा. ओके. एडवांस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2. So I'm importing this question. Till then you can finish your polling. Okay, can you see the screen now? Okay, so let me see your poll. So I am sharing your results. So 95%, 40 students को clear है, 2 students को clear नहीं है. कौन है वो 2 students? You can ask me or you can raise your hand. क्या clear नहीं है? Right. Those 2 students can ask me your doubts. If you have any doubts, you can ask me.
हाँ, आप अलग वे से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि इसी वे से करना है। 3 इक्वेशन अगर आपके पास हैं तो उसके साथ आपको अलग अलग सब्स्टिट्यूट करने में, अलग अलग सिंप्लीफाई करने में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। एक आप अलग अलग ऑप्शन कर सकते हो। आप पहले 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिर इक्वेशन को अलग तरीके से लिख सकते हो, एनीथिंग। Now let us see this advanced question number 2 in 4 minutes. Prove that through a given point not lying on a given line, we can draw only one perpendicular to the given line. एक लाइन को मैं सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूँ। नाउ हाउ आई कैन ड्रॉ दिस और प्रूव दिस। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन मैंने आपको दिखाया। हैव वी सीन मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन? एनी क्वेश्चन? Tell me students, have you seen method of contradiction? Yes, chapter 5 में दिखा है ना? नहीं, तो ये क्वेश्चन आपको करना है बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो जो आपके मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन वाले क्वेश्चन है उसका अलग से, यस ओके, उसका अलग से लिस्ट बना लो कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करने हैं जियोमेट्री में। ओके, तो ये एडवांस क्वेश्चन है, क्विकली समझाता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं चलेगा तो डोंट वरी। ओके, सबके लिए नहीं होते एडवांस क्वेश्चंस। तो सपोज मैं पहले एक लाइन ले रहा हूँ, राइट। सपोज योर लाइन इज एल, राइट। मैथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन कोई आपको अलग से नहीं पढ़ाएगा, राइट। स्कूल में आपका 5th चैप्टर चल गया तो आपको अंदर ही हो गया होगा, बट आपको बोला नहीं होगा कि मैथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इफ देयर इज एनी पॉइंट पी, वो पी से आप जो लाइन एल पे नहीं है तो उससे आप सिर्फ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो वो लाइन पे। So here I am trying to draw 2 perpendiculars on this line. Suppose मैं यहाँ पे 2 perpendiculars draw कर रहा हूँ। This is your perpendicular number 1. Okay. This is your perpendicular number 2. Method of contradiction याद आ रहा है ना? क्वेश्चन में जो बोल रहे हैं उसका उल्टा करना है। यहाँ पे आपको क्या बोला कि आप एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो। मैं बोला नहीं, हम 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सपोज P में से एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है, दैट इज लाइन M, right, which is perpendicular to L. This is another perpendicular N, which is also perpendicular to L. Just assume. Okay. So suppose there are 2 perpendiculars or 2 lines M and N passing through P which are perpendicular to L. Now can you observe here triangle PAB students? Right. Suppose यहाँ पे ये आपका point of intersection है A और ये है आपका point of intersection B. Can you see here triangle PAB? Now in triangle PAB, angle P plus angle A plus angle B is 180 or not? Angle sum property, tell me. Yes or no? So therefore, angle P plus angle A is 90, angle B is 90 is equal to 180. 90 plus 90 is 180. So angle P is 0 or not? I can get value of angle P equal to 0. Is it possible? Tell me. Can I get angle P equal to 0? Students? Okay. So here I got angle P equal to 0. So if angle P equal to 0, that means I can say hence, अगर एंगल P 0 है तो उसका मतलब क्या हुआ? सी दिस एंगल इज 0। ये 0 कब हो सकता है? दिस इज योर लाइन L। तो अगर M लाइन भी यहाँ पे है एंड N लाइन भी यहाँ पे है, इफ बोथ लाइंस आर सेम, राइट, देन दिस एंगल इज 0 और नॉट? तभी उन दोनों लाइन के बीच का एंगल 0 होगा। Hence lines M and N must coincide.
ओके, तो वो आपके कोइंसाइड होने चाहिए. सो देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग. आप दो अलग लाइन नहीं ले सकते, कोइंसाइड होने चाहिए लाइंस, मतलब एक ही लाइन होनी चाहिए. देयरफॉर ओनली one perpendicular line can be drawn through a given point to a given line. Okay, is it clear? Yes. This आपका zero angle, everyone. So sir, we can do this by, if both the lines are perpendicular to same line, they will be parallel, and since they are parallel, they will not meet anywhere, but they meet on P. हाँ, yes, वो भी चलेगा. Okay. So this is all about today. तो आज का होमवर्क असाइनमेंट पे बना लूंगा 6.4. आपको पूरा 6.4 सबमिट करना है एक साथ, फॉर्मूला बुक, रेगुलर बुक, ये सारे क्वेश्चंस. ओके, फॉर्मूला बुक में जितने भी मैंने आपको थ्योरम कराया देख रहे हो, पूरा लंबा है. ठीक है, सारी चीजें आपको सबमिट करनी है, एंड योर ड्यू डेट विल बी टिल नेक्स्ट, आज ट्यूसडे है ना, थर्सडे तक आपको सबमिट कर देना है. यू हैव टू सबमिट दिस बाय थर्सडे. ओके, बिकॉज ऑलरेडी आपको लिखना ही होता है. ओके, सो बाय एवरीवन. इट इज 3:15. ऑलरेडी आपको बता ही दिया था कि काहूट वीक में एक ही बार खेलेंगे, दैट इज ऑन सैटरडे. ओके, चलो बाय एवरीवन, सी यू इन नेक्स्ट क्लास. कैन वी डू इट विथ एनी थियरम? यस प्रहलाद. नहीं, पर ये आपको इसी मेथड से करना पड़ेगा प्रहलाद. दिस एडवांस क्वेश्चन ये आपका मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से ही होगा. ओके, okay, so bye everyone.